Assalamu alaikum, my dear students, and I welcome you all in biochemistry lecture in which we will discuss MCQs with explanations on carbohydrate. I am Dr. Sayyid Irfan Raza, and in this lecture we will discuss almost 10 MCQs, important MCQs from the carbohydrate portion. So the very first MCQ is enolene is polymer of. Enolene polymer है किस कार्बोहाइड्रेट शुगर का? फ्रुक्टोज, maltose, mannose, lactose, or it is sucrose. So enolene is the polymer of which of the carbohydrate? Answer is enolene is a polymer of fructose. That is, enolene is made up of multiple units of fructose. Repeated polymer mean many thousands or hundreds units of the fructose combined together through glycosidic bonds to produce enolene. What is enolene? अगर ये क्वेश्चन हो तो इनोलिन इज एन indigestible carbohydrate, a polysaccharide made up of 20 or several thousand fructose molecules with a glucose molecule on the end. Enolene belongs to fructanes. It is a soluble fiber. So इसकी importance क्या है? Enolene को हम क्यों discuss कर रहे हैं? In this diagram you can see that there are many hundreds or thousands of the small molecules of the fructose which are joined together to produce enolene. So this is a molecular structure of the enolene, and enolene is basically present in these vegetables, for example, are the wheat or chicory root, shallots or onions, and these are the leeks or rye. These are the few of the seeds in which enolene is heavily present. So enolene is basically used to weight loss purposes, and it is also prescribed for travelers diarrhea. Whenever you have to travel at national or international level, you should take more and more onions or the enolene so that you can avoid travelers diarrhea. In the case of diabetes mellitus, enolene is sometimes also prescribed, or it can control the sugar, and cholesterol level is also reduced by using enolene. But it has some of the, besides some of the benefits, it has some of the drawbacks. For example, in the pregnancy it is not prescribed to use much of the enolene. It causes abdominal bloating and cramps or pain in the abdominal region. Flatulence, loose stools or diarrhea is also observed in case of excessive use of enolene, and promote dental caries as well. In the case of constipation, enolene is also avoided because it produces a lot of gases which can cause more and more painful constipation as well. So the next question is more abundant carbohydrate in the diet of vegetarian. That is, अगर आप लोग vegetarian हैं, you are not protein intake नहीं कर रहे और carbohydrate intake नहीं करते, और आप vegetarian हैं, तो vegetarian की diet के अंदर सबसे ज़्यादा important carbohydrate या abundant carbohydrate कौन सा होगा? Number 1 is amylose. Do you think it is lactose? Do you think it is cellulose, maltose, or glycogen? So which of the carbohydrate will be more abundantly present in the diet of vegetarian? If you are taking more and more vegetables, which carbohydrate will be in the diet? So हम देखते हैं कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. अमाइलोज इज अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सो वेजिटेरियन जो है उसके अंदर ग्लूकोज क्या प्रेजेंट हो सकता है? Then disaccharide, glucose and galactose. Galactose is present in the milk. We are talking about vegetable, so lactose cannot be there. Cellulose, polysaccharide with beta 1,4 glycosidic bonds, a structural fiber of plants. So polysaccharide glucose beta 1,4, a structural fiber of plants. Maltose क्या है? It is a disaccharide of glucose. So repeated two molecules of glucose combined together to give maltose. Glycogen is a polymer of glucose. So what you think? What could be the answer? I think cellulose could be the answer because it is plant fiber and you are taking more and more vegetable. So the answer is cellulose. What is the importance of cellulose? Cellulose has no calories, vitamins or minerals, and no protein, carbohydrate or fat. Cellulose is a type of insoluble fiber which cannot be digested. So why we use it? When you eat a piece of celery, the more component of the vegetable are digested, but the cellulose moves through your digestive tract unchanged. This provides several important benefits. और वो benefits कौन कौन से हैं? For example, if you are taking more and more vegetable, you can see here in this diagram, some of the vegetables important उसके benefits जो हैं वो कौन कौन से हैं? Prevent constipation. It prevent weight gain. So it avoids weight gain, बल्कि आपको slim and smart रखता है.
improve heart health as well. So it is for these are the key benefits of the using vegetables in your diet. So this is why cellulose is very important. So the next question is a mucopolysaccharide that harbor anticoagulant activity. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी क्या है. दैट इज ब्लड क्लॉटिंग को अवॉइड करता है. सो एंटीकोआगुलेंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा म्यूकोपोलीसैकेराइड है? वन ऑफ द चॉइस इज कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट बी, द अदर वन इज केराटिन सल्फेट, हेपरिन, डर्माटिन सल्फेट, hyaluronic acid. So which one of the mucopolysaccharide can be there in anticoagulant activity, whether it's a quinine sulfate, heparin, hyaluronic acid? So let's see. Quinine sulfate जो है हमारे पास helps to maintain the structure of the tissues. So अगर इसने structure of the tissues को करना है, there is no anticoagulant activity. Keratin sulfate is used to keep cornea transparent. Heparin is used as an anticoagulant. Oh yes. So heparin can be the direct answer. Rest of the choices जो हम उसको eliminate कर देंगे. Maintains the shape of the tissues. And hyaluronic acid is used to lubricant and shock absorber, promotes wound healing. ये इसके काम है. So heparin जो है, it is very important. The right answer is heparin, a blood thinner. So blood thinner naturally किन diets के अंदर present होता है? Some of the onion, ये हमारे पास हल्दी है, या डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर नेचुरल ब्लड थिनर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दीज आर सम ऑफ द गरम मसाले जो हम यूज़ करते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ब्लड थिनर के लिए. विटामिन सी भी इसके अंदर प्रेजेंट है, हल्दी है, जिंजर है. दीज आर सम ऑफ द नेचुरल ब्लड थिनर्स. तो ये ब्लड थिनर्स जो हैं ये आपकी ब्लड को, आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. नेचुरल ब्लड थिनर्स आर सब्सटेंसेज दैट रिड्यूस द ब्लड्स एबिलिटी टू फॉर्म क्लॉट्स. ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस. क्यों? कि जिस वक्त आपको कहीं ब्रूज या कट, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी देर के बाद नॉर्मल प्रोसीजर है. लेकिन बट समटाइम्स द ब्लड क्लॉट टू मच लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन बी पोटेंशियली डेंजरस. स्पेसिफिकली कार्डियक इश्यूज जो हैं वो कॉज हो सकते हैं. वो क्लॉट जहाँ जहाँ मूव करेगा रिस्पेक्टिव एरियाज को डैमेज करेगा. सो अगर इफ़ यू आर टेकिंग दीज डाइट्स यू विल अवॉइड ब्लड क्लॉटिंग. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर्स एक्सेप्ट. कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज. लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, माल्टोज इज अ माल्ट शुगर, सुक्रोज इज अ केन शुगर, शुगर गन्ना जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, फ्रुक्टोज इज फ्रूट शुगर, एंड गलैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मिल्क इन एसोसिएशन विद ग्लूकोज, सो इट प्रोड्यूसेस लैक्टोज. So the right answer is sucrose. All of the other sugars are reducing sugars except sucrose. Sucrose is non-reducing sugars. So reducing sugars कौन सी होती हैं? Reducing sugar is any sugar that is capable of acting as a reducing agent because it has a free aldehyde group or free ketone group. All monosaccharides are reducing sugars along with some of the disaccharides. Sucrose के कुछ health के ऊपर क्या effects हैं? It can cause mood swings. Why? Because sucrose जो है, when you take too much amount of sucrose, तो इसमें क्या होगा कि इट विल यील्ड लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सर्कुलेशन इमीडिएटली. सो पहले ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, फिर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, देन इंसुलिन विल कम इन एक्शन और ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी, टेकअप करेगी ग्लूकोज को, एंड इट विल प्रोवाइड टू द पेरिफेरल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज जितने भी उनको इंसुलिन ग्लूकोज को प्रोवाइड करेगी. सो एकदम ड्रॉप एंड इंक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल विल कॉज सम ऑफ द मूड स्विंग्स. सो इट कैन excessive use of the sucrose will gain weight, and insulin sensitivity को भी affect करता है, टूथ डीके को कॉज करेगा बिकॉज जिस वक्त आप सुक्रोज लेते हैं तो उसमें से इमीडिएटली ग्लूकोज टूथ की सरफेस के ऊपर सेट ऑन करेगा और उसकी सरफेस को, एनामल को डैमेज करेगा, टूथ डीके कॉज होगा. चेंज इन कोलेस्ट्रॉल को भी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कॉज करेगा. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ 2-month-old चाइल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेंसिटिविटी टू फ्रुक्टोज इन द डाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड कंटेन फ्रुक्टोज एंड देयरफॉर शुड बी अवॉइडेड इन द फीड. क्वेश्चन क्या है? 2-month-old चाइल्ड है, फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस ऑब्जर्व की गई है. विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसाइड शुड नॉट बी यूज्ड इन द डाइट ऑफ दिस चाइल्ड? नंबर 1 इज सुक्रोज, उआबेन, लैक्टोज, माल्टोज, मैनोज. अब हम देखते हैं कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, उआबेन इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड, लैक्टोज इज लैक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मैनोज इज शुगर मोनोमर. ये तो डाइसेक्राइड ही नहीं है, इसको तो हटा दें.
अब देखें सब में किस में फ्रुक्टोज है. सो इट इज ओनली सुक्रोज. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज, पार्टली फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. तो सुक्रोज को आप अवॉइड करेंगे इस बेबी में जिसमें फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है, बिकॉज सुक्रोज विल यील्ड ग्लूकोज. ग्लूकोज तो इस्तेमाल हो जाएगा इन द मेटाबॉलिज्म, बट फ्रुक्टोज कैन नॉट बी मेटाबलाइज. तो ये आपको फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस काज करेगा. सो द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज. Hereditary fructose intolerance is an inborn error of fructose metabolism caused by deficiency of enzyme aldolase B. Individuals affected are asymptomatic until they ingest fructose, sucrose or sorbitol. इन सब में fructose मौजूद है. Chronic diarrhea or liver inflammation in early infancy. Other symptoms include vomiting, nausea, restlessness, pallor or sweating, trembling and lethargy. So in this child, sucrose should be avoided in the diet. Next question is, which carbohydrate is not exclusively glucose in nature? Amylose, cellulose, sucrose, maltose or glycogen. Amylose is made up of glucose polymer. You can see alpha 1,4 glycosidic linkage hai. Cellulose is made up of glucose polymer. You can see alpha 1,6 linkage hai. Sucrose is galactose and glucose polymer. You can see here. Maltose is glucose disaccharide hai. You can see here, these are the two glucose molecules, and glycogen is a glucose polymer. You can see here 1,6 and 1,4 linkages branch chain के साथ glycogen present है. So which one of the carbohydrate contains glucose along with some other mannose or monomer? You can see here galactose along with the glucose. So sucrose could be the right answer. Yes, sucrose is the right answer. Next question is, glucose and galactose are C1 epimer, C2 epimer, 3, 4, 5 epimer. कौन से? C4 epimer. So what is epimer? In fact, epimer are carbohydrate which vary in one position of the placement of the hydroxyl group. यानी कि अगर आपके पास हेक्सोज है तो उसमें से किसी एक कार्बन पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट होगा. So you can see here, this is the glucose and galactose as given in the question. You can see hydroxyl group is same, hydroxyl group is same. You can see the hydroxyl group is different at this position. This is carbon number 4, while in 5 and 6 the hydroxyl group position is same. So there is only one carbon in which the hydroxyl group position is different. Similarly, in glucose and mannose, one of the hydroxyl group is different at C2. So mannose and glucose C2 epimer. Glucose and galactose are C4 epimer. So C4 is the right answer. Next question is, a 45-year male patient diagnosed with cataract prescribed eye ultrasound. Ultrasound report showed strong osmotic effect causing inflammation and clouding of lens. Accumulation of which of the following compound can cause cataract in this patient? किस चीज़ ने cataract cause किया होगा और पहले clouding of lens cause कर रहा है? Glucuronic acid, indiols, glucose, sorbitol, cellulose. The right answer is sorbitol. So if the sorbitol is taken up or gets accumulated in the lens, it will cause clouding of lens initially and then it will lead to the cataract. So you can see here, this is the normal lens. It is very much transparent, while here the lens is not that much transparent. It can cause yellowish effect or clouding of the lens because of the sorbitol gets accumulated. When sorbitol collects in the lens, it can affect cells and naturally occurring proteins, causing the lens to become less clear and more opaque. As you can see here, this condition eventually lead to cataract formation, making the world around you appear blurry, yellowish or faded. The next question is, a 65-year-old female visits orthopedics in military hospital with complaint of severe knee pain. Doctor diagnosed the case of osteoarthritis. Chemical analysis of synovial fluid from the knee showed deficiency of what thing? Mucoproteins, heparin, keratin sulfate, chondroitin 4 sulfate, हाइलोजुरानिक एसिड. अब हम इनको देखते हैं कहाँ पर है. द राइट आंसर इज हाइलोजुरानिक एसिड. इस चीज़ की डेफिशिएंसी है. सो अगर आपके पास डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेन्स होते हैं शोल्डर, नी, एल्बो, रिस्ट, मोस्ट प्रोबेबली हिप और नी जॉइंट्स, अगर यहाँ पर या शोल्डर में भी पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, और उसमें अगर आप नी, फॉर एग्जांपल इट इज़ द नी कैप एंड नी, यहाँ से आप फ्लूइड निकाल के साइनोवियल फ्लूइड को चेक करेंगे तो उसमें हाइलोजुरानिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी. So then you inject some of the hyaluronic acid in the knee joint. It will help to boost what? Osteoarthritis. Hyaluronic acid injection may reduce or relieve inflammation. यहाँ पर अगर inflammation है, like you can see in different joints, inflammation है तो inflammation को relieve करती है, swelling को relieve करती है, pain में कमी आएगी.
caused by wearing the cartilage and bone in osteoarthritis joints. The injected gel helps to restore lubrication and also induce the growth of new cartilage and bone tissues in these joints. The last question is pentose sugar present in the heart muscle is. हार्ट मसल के अंदर एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, वो कौन सी है? जाइलोस, लाइक्सोस, जाइलोलोस, राइबोलोस और राइबोस. दीज आर ऑल पेंटोजेस. तो हार्ट के अंदर आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ है हार्ट मसल्स के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट है. जाइलोस इज प्रेजेंट प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड गैक्स, ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन्स. लाइक्सोस इज प्रेजेंट इन द हार्ट मसल्स. यूरानिक एसिड पाथवे इंटरमीडिएट है. राइबोलोस मेटाबोलाइट एंड एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. Ribose is present in nucleic acid. So lysose is the only pentose which is present in the heart muscle. Right answer is D, lysose. So lysose is found in heart as a fuel source. Lysose is an aldopentose, a monosaccharide containing 5 carbon atom and including an aldehyde functional group. So these are the 10 important MCQs from the carbohydrate portion. In the last lecture, dear students, there was a mistake in the unit of this, that is cell biology के अंदर से अगर हम MCQs के points discuss कर रहे थे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का diameter हमने discuss किया था और वो dimension जो थी 1 × 10⁻³ पिकोमीटर नहीं है, it is micrometer. So माइटोकॉन्ड्रिया का diameter जो है वो यहाँ पर mention हुआ है. This was the correction of the last lecture. Thank you very much for your time. And if you like this effort, please subscribe this channel of Biochemistry with Dr. Irfan Raza. Hit the bell icon button so that you can have the latest notification of the MCQs and updated lectures. And please like this channel as well.